और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स। अब ये टॉपिक में हाँ कपलिंग चीज क्या होती है? कपलिंग बोले तो कि भैया द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिसीविंग फ्रॉम नेबरिंग कॉइल। कपलिंग का मतलब ही वही होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इनके बीच में कपलिंग कितना हो रहा है? The magnitude of magnetic flux which is receiving from the neighboring coil from one coil to the another coil। एक कॉइल की वजह से या जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ जनरेट होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल में कितना आ रहा है, दूसरे कॉइल में कितना आ रहा है, उसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक, दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल कांसेप्ट फॉर दिस कपलिंग। व्हाट इज कपलिंग? द अमाउंट ऑफ नेबरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, द अमाउंट ऑफ नेबरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स reach from one coil from to the another coil। एक कॉइल से दूसरे कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स रीच हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स रीच हो रहा है, यहाँ इसकी वजह से यहाँ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स रीच हो रहा है, so that is called as coupling। the amount of neighboring magnetic flux reaching from one coil to the another coil, that is called as coupling। इसको कहते हैं हम लोग coupling। And the equation for the coupling is, equation होती है कपलिंग्स की, तो इक्वेशन याद रखेंगे हम लोग, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं इसलिए देख रहे हैं हम लोग इसको। So K is equals to, so this is M divided by under root of L1 and this is L2, where K is a coefficient of coupling, K coefficient of coupling है, M mutual inductance, coefficient of mutual inductance, yes this is mutual inductance, this L1 is a self inductance, L1 is the meaning of L1 self inductance in the primary coil, where L2 is a self inductance in the secondary coil। So this is the equation for the coupling, so that is K is equals to M divided by under root of L1 L2। So where K is a coefficient of coupling, yeah, it is also called as coupling, and the equation K is equals to M divided by under root of L1 and L2, so where M is a mutual inductance, yeah, coefficient of mutual inductance, L1 is a self inductance in the प्राइमरी कॉइल, where L2 is a self inductance in the secondary coil। यहाँ पे हम लोग तीन केसेस लेते हैं, तीन केसेस याद रखनी है हम लोग को बस, ठीक है, कि अगर K का वैल्यू बढ़ रहा तो, ठीक है। सेकंड केस हम लोग देखेंगे कि जब K का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.5 या हम लोग 1/2 बोल सकते हैं, क्लियर। और केस नंबर 3 की भैया इसकी वैल्यू K इज लेस देन 0.5। तो तीन चीजों के लिए कपलिंग हम लोग याद रखेंगे। इफ द K इज इक्वल टू 1, second case K is greater than 0.5, and the third case that is K is less than 0.5। so when the K is equals to 1, so it is called as perfectly coupled। when the K is equals to 1, जब K का वैल्यू 1 रहेगा, so it is called as perfectly coupled, it is called as perfectly coupled। when K is greater than 0.5, so it is called as hardly coupled। ठीक है, पहली चीज को कहते हैं हम लोग perfectly coupled, perfectly coupled, ठीक है। एंड सेकंड चीज को कहते हैं हम लोग हार्डली कपल्ड, सो इट इज कॉल्ड एज हार्डली कपल्ड। एंड देन व्हेन द K is less than 0.5, so it is called as smoothly coupled, smoothly, it's called as, so this is concept is called as coupling। so what is coupling? The amount of neighboring magnetic flux reaching from one coil to another coil, so that is called as coupling, yeah, otherwise as coefficient of coupling। so when there coefficient of coupling, so this is this term, ये जो दो लाइंस पैरेलल लाइन डिनोट कर रहा है, ये डिनोट करता है कि ये भैया कपल्ड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। so it is a coupling, so where phi p is a magnetic flux in the primary coil, phi s is a magnetic flux in the secondary coil, so where Np is a number of turns in the primary coil and when Ns is a number of turns in the secondary coil, ठीक है। so it is exactly working as a transformer, जो हम लोग ने कल पढ़ा हुआ था, ठीक है। so the equation for the coupling K is equals to M divided by under root of L1 L2, clear। so when the, इसमें तीन केसेस पढ़ी जाएगी, तीन केसेस when K is equals to 1 and when K is greater than 0.5, K is less than 0.5। so when there is K is equals to 1, so this is called as perfectly coupled, is perfectly coupled। so when there is K is greater than 1, so it is called as hardly coupled, and when there is K is less than 0.5, so it is called as smoothly coupled। so these are these terms। और मैं इसके यूनिट और डायमेंशन ले लूं तो आपके पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के डायमेंशंस यूनिट्स है आपके पास में। अगर मैं यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट ले लूं, कोई भी यूनिट ले लो, तो आप इसके साथ में ये कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। देखो यहाँ पे
पे, सो दिस इज m और यहाँ L1 और L2 है। ये जब दोनों का आप यूनिट लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट के साथ में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और म्यूचुअल इंडक्टर और सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट्स एंड डायमेंशन दोनों सेम ही है, ठीक है। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के कारण स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों के जो यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम हो जाएंगे। मतलब इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर? सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कपलिंग, इसको कहते हैं हम लोग। समझा? सो वेरी सिंपल, लिख लो इसको वर्ड से। सो दिस इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।